class 10th English medium. Today in your online class subject physics, your chapter is that 10 reflection of light and refraction of light. So in this chapter today is your topic is that lens formula. So last online class we have studied in earlier online classes the formation of the image by convex lens in different cases. So you have tried to solve in other questions or the formation of the image by concave lens in different cases. So today is that lens formula. What is lens formula? This formula is valid for both types of the lenses, convex lens and concave lens. So here next lens formula. This formula it gives the relationship between distance of object from the lens u. Lens formula is known as the formula it gives this formula lens formula. This formula it gives the relationship between distance of object from lens. It is denoted by u, and the distance of image from the lens v. It is denoted by v, and if focal length of spherical lens is small f, so then the relationship between u, v and f is 1 by f here. Then the relationship between u, v and f is that 1 by f equal to 1 by v, 1 upon v minus 1 upon u. Is known as the name of lens formula. Clear? So here it is the lens formula is relationship between the u, v and f, and the meanings of the u, v and f is that u is the distance of object from the lens, v is the distance of image from the lens, and small f is the focal length of lens. ठीक है? और we measure the distance of the lens is the optical center of the lens, है ना? हम लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं. So it is same as the distance of the optical center of the lens from the object, or we can say that in other words the distance from the lens of the object. Both statements are same. Clear? So then the relationship between u, v and f is that 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u is known as the name of lens formula. It is the lens formula here. So the lens formula is also valid in all types of lenses. This formula 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u is also valid in all types of lenses. That means convex lens and concave lens, and all types of the image. All types of the image, that means virtual or they are virtual or real. Both types of the image. ठीक है? Formed by the spherical lens. In this formula, we put proper values of u, v and f with proper sign convention for solving the numerical questions. Up in this formula 1 by f equal to 1 by v minus 1 upon u. For solving the numerical question about the spherical lenses for both types of the convex lens and concave lens, we put up their values u, v and f with proper sign convention. Proper sign convention
क्या है आपको हम पहले भी बताए हैं कि लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है। यदि आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस फाइंड की जा रही है तो निगेटिव, और इफ measure the distance in the direction of the incident light then it taken positive, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में जो भी डिस्टेंस है वो प्लस, और जो बिलो ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है वो निगेटिव। क्लियर? सो हियर विद साइन कन्वेक्शन, ठीक है। सो हियर u is the distance of object from the lens, it is always negative because it measures from the lens of the object, ठीक है। so it is taken negative because it is measured in the opposite direction of the incident ray, ठीक है। तो यदि अपोजिट इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे लाइट रे जा रही है, कोई लेंस है ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर का डिस्टेंस नहीं पॉजिटिव, लेकिन आप हर डिस्टेंस आपको सेंटर से लेना है तो इधर लिया जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। सो पहले बताया गया है आपको। सो हियर इन लेंस फार्मूला बी पुट प्रॉपर वैल्यूज uv and f with proper sign convention for solving the numerical question, ठीक है। if here three values are in this formula u, v and f, if any two values are known in these three values, ठीक है, so you find third value, you can third value by using this lens formula, ठीक है। सपोज दैट u और v फाइंड है तो f की निकाल सकते हैं, f और u फाइंड है तो v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू इन दिस लेंस फार्मूला and solve and you get the unknown value with the help of this lens formula. So here next topic is that magnification. Here magnification is defined as the magnification is defined as the ratio of size of image and size of object for any spherical lenses, ठीक है। आप मिरर में भी पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन सेम टाइप है। सो द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये मिरर के लिए भी वैलिड था और बोथ यहाँ भी लेंस के लिए भी मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन सेम है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, यहाँ लेंस के बारे में बताना है, इज डिफाइंड एज द ratio between the size of image and size of object here by the size of object for any spherical mirror, चाहे कॉन्वेक्स for any spherical lens, sorry, ठीक है, for any spherical lens. Here both types of the lens, convex lens and concave lens. So this statement is valid for both types of the lenses. The magnification represented by m is indicate the magnification. The size of image is denoted by I, image, and the size of the object O means object. Then m equal to I upon O, where m is the magnification, I is the image, size of image, and O is the size of the object. So, but I upon O equal to V upon U. The relationship between the U, V, I and O and M is that I upon O equal to V upon U. I upon O is also related to the distance of object and distance of image in the lens. So here I upon O equal to V upon U. Then we get formula is other form, m equal to I upon O equal to V upon U. It is the formula for magnification of the lens. So here next we have is that here in this chapter, now it is your next topic is that solving the numerical question about the lenses, ठीक है। Here some examples are understand by solving is understand to you
ठीक है, एंड some examples are solved to in our home, ठीक है, in given your book. So here first numerical question is that understand. So about the lens is that your statement is the question is that first question here a concave lens has focal length of 15 centimeter. 15 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है. एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर. हम ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखें लेंस से कि जो इमेज है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फॉर्म करें. फॉर्म द लेंस एंड आल्सो फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. ठीक है, तो कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज गिवन दैट, और कोई ऑब्जेक्ट है जो लेंस से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड किया जाए कि जो इमेज है वो फॉर्म बाय द लेंस इज दैट 10 सेंटीमीटर. क्लियर, एंड also find the magnification produced by the lens. क्या है? So here a concave lens always forms a virtual erect image. You know by the concave lens the formation of the image by the concave lens is always forms a virtual and erect image. Virtual and erect image on the same side of the object. On the same side of the object. ऑब्जेक्ट की ही ओर जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसी साइड में आपका इमेज भी बनता है. कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, ठीक है, और इरेक्ट बनेगा. सो हियर गिवन इन दिस क्वेश्चन v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है. सो u इज निगेटिव, ठीक है, सो v इज आल्सो निगेटिव. तो v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f इक्वल टू फोकल लेंथ इज दैट गिवन -15 सेंटीमीटर, एंड u इज द वैल्यू ऑफ u इज हियर फाइंड आउट. u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. क्लियर, सो बाय लेंस फार्मूला वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v minus 1/u. Put the value in this formula of f and v and solve. Here to 1 upon -15 equal to 1 upon -10 minus 1/u. So here -1/15 प्लस इधर माइनस है, इक्वल किधर गया तो +1/10 इक्वल टू -1/u. So here 15 और 10 की जो एलसीएम 30 आई, तो यहाँ 15 2 जा 32 तो -2 प्लस और 10 3 का 30, 3 टाइम्स गया, 3 से मल्टीप्लाइड हुआ 1, तो 3 into 1 तो 3 इक्वल टू -1/u. सो हियर 3 minus 2 1 upon 30 इक्वल टू -1/u, और u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. हियर u is the value of u means the distance of object from the lens. मतलब हमको 30 सेंटीमीटर पर लेंस से 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को यदि प्लेस्ड किया जाए कॉनकेव लेंस के फ्रंट में, तो हमको जो इमेज फॉर्म होगा वो 10 सेंटीमीटर पर बनेगा. ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है. सो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the lens is that -30 centimeter. And now next part of the find the value of magnification. So magnification equal to m equal to v upon u. So put the value of v and u. So m equal to -10 upon -30. Here minus cancel हुआ 1/3. Then m equal to +1/3. Here magnification, the sign of the magnification is here positive, is indicate that the nature of the image is erect. The nature of the image is erect and virtual. Clear? So here
find the value of magnification and the distance of object from the lens, and you solve many other numerical questions about the concave lens and convex lens given in your book. If you have any problem, ठीक है, so ask me, I will try to remove your problem. Clear?